Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah, and I hope that you have done your exams very greatly. Today my topic is about thinking and its nature. What is thinking? As all of we know that thinking is an incredibly complex process and it is most difficult concept in psychology to define or explain. जो भी हम सोचते हैं, thinking in Urdu means, if we will translate the thinking in Urdu language, that means हम जो सोचते हैं, whatever we think, जो हम सोचते हैं, that is thinking. That is incredibly complex process, and is, we can say, it is difficult concept in psychology. However, it has not we can say deterred the thinkers, and many different definitions almost existed or is existing today, as different psychologists, different thinkers have given their own opinion regarding the definition of the thinking, and some of I'll discuss here. According to Roos, in 1951, he was a philosopher, a psychologist and a thinker. He defined thinking as a mental activity in its cognitive aspect, or mental activity with regard to psychological objects. Or another psychologist who is known as Gilmer, he gave the definition of the thinking in 1970, that thinking is a problem solving process in which we use ideas or symbols in place of overt activity. Simply जो ये thinking है, ये हम किसी बारे में जब सोचते हैं, that means अगर हमारे पास कोई problem होती है और हम उसका solution ढूंढने के लिए सोचते हैं, that means it is a problem solving process. ये जो thinking है, that is a problem solving process. हम क्या करते हैं, हम कुछ ideas लेते हैं या फिर कुछ symbols लेते हैं किसी सोचने के लिए, rather than we go on direct to the activity. That means पहले हम सोचते हैं, बाद में हम उस चीज़ पे रिएक्ट करते हैं. सोचना, that is thinking. That means we are solving our problems. All the whatever definitions about thinking, different philosophers, psychologists has given, different thinkers have given, they have also simply defined as thinking is a problem solving behavior. जो भी हम इन क्यों सोचते हैं, वाई वी थिंक, हम इसलिए सोचते हैं जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है. अगर हमारी लाइफ सब कुछ ईजी ही होती, हमें सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन जब हमारे लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम इसका सोल्यूशन कैसे निकालें. दैट मीन्स thinking is a problem solving process. Now coming to its nature, what is the nature of the thinking? As we have discussed that thinking, so far we can say it is a problem solving activity or behavior. Some of the nature of the thinking is like that. First of all, thinking is essentially a cognitive activity. It is completely an cognitive activity. That means it completely depends on our mind, whatever which it is, or we can say it is a mental activity. Cognitive activity means it is a mental activity. That means whatever we think, it is only done by our mind. It is not done by our heart. It is not done by our other organ systems. That is only mind through which we can think. And second, it is always directed towards achieving some purpose. That means अगर हम कुछ सोचते हैं, दैट मीन्स उधर कुछ पर्पस है. हम किसी चीज़ पे सोचने के लिए, दैट मीन्स देयर इज सम पर्पस ओवर विच वी आर थिंकिंग. दैट मीन्स इट इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग सम पर्पस. इन वी कैन से इन genuine thinking, we cannot let our thoughts wander aimlessly as happen in the case of daydreaming and fantasizing. सपोज़ हम बोलते हैं हम किसी फैंटेसी वर्ल्ड में हैं, या फिर हम कुछ ऐसा दिन में सपने देखते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. हम एमलेसली कुछ भी नहीं करते हैं. हम अगर सोचते हैं तो दिमाग लगा के सोचते हैं, या कुछ पर्पस होता है. एमलेसली हम कुछ भी नहीं, एज इफ़ यू आर लिविंग इन द फैंटेसी वर्ल्ड, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. जब भी हम कोई चीज़ सोचते हैं, दैट मीन्स कोई ना कोई पर्पस है, किसी ना किसी एम, कोई ना कोई टारगेट है जिसके वजह पे हम सोचते हैं, जिसको अचीव करने के लिए हम सोचते हैं. हम क्या रास्ता निकालें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो, हम क्या रास्ता निकालें कि ये एम अचीव हो जाए, हम क्या रास्ता निकालें कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. सो दैट मीन्स एमलेसली वी डोंट डे ड्रीम इन द थिंकिंग दैट ये हो जाएगा तो होने दो, वो हो जाएगा तो होने दो. देयर द टर्म थिंकिंग डज नॉट एग्जिस्ट. जहाँ पे हम ये सोचते हैं कि होने दो, जहाँ पे हम सोचते हैं, दैट मीन्स थिंकिंग एग्जिस्ट.
third nature of the thinking is that thinking is described as problem solving. As I have already told you that it is a problem solving behavior. If we will describe the thinking, in only one word, that is a problem solving behavior from the beginning till end. So there is some problem around which the whole of the process thinking resolves, but every problem solving behavior is not thinking. लेकिन अब आप बोलोगे कि हर कोई problem solving behavior thinking है, that is not true. अगर हमें कोई चीज़ सोच रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, दैट मीन्स हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इसलिए हम सोचते हैं कोई ना कोई रास्ता निकले, हम उस प्रॉब्लम सॉल्व कर सके. सो इट इज़ ओनली रिलेटेड टू द इनर कॉग्निटिव behavior. Another nature of the thinking is that in thinking there is a mental exploration rather than motor exploration. One has to suspend one's overt or motor activities while engaging in thinking तो सम काइंड ऑफ मेंटल एक्सप्लोरेशन और द अदर. तो मैंने आपको पहले ही बोला, जो ये थिंकिंग होता है ये कम्प्लीटली मेंटल एक्सप्लोरेशन होता है. हमारा दिमाग ही सोचता है, ना कि हमारे अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी सोचते हैं. हमारा जो ये दिमाग है यही सोचने पे मजबूर हो जाता है कि हमें ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी है. थिंकिंग कैन शिफ्ट ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम एंड स्पेस. लेकिन जो ये थिंकिंग है दैट इज़ सिम्बॉलिक एक्टिविटी. इन थिंकिंग मेंटल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम is carried out through some signs, symbols and mental images. तो जो भी हम सोचते हैं, अगर हम ओवर थिंक करें दैट मीन्स वो प्रॉब्लम हो सकती है हमारे लिए. दैट इज़ नॉट, वी ओवर थिंकिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर, बट ओनली थिंकिंग इज़ अ प्रॉब्लम. अगर हम ओवर थिंक करेंगे एक चीज़ पे, उससे हमारा मेंटल इम्बैलेंस हो सकता है, हमारी मेंटल एक्टिविटी पे असर हो सकता है. लेकिन सिंपली अगर हम थिंकिंग को डिफ़ाइन करें तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है. हमें किसी चीज़ पे सोल्यूशन निकालना, तो हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. इट इज़ बेसिस ऑफ ऑल थिंकिंग का जो बेस है दैट इज़ ऑल कॉग्निटिव एक्टिविटीज़, दैट मीन्स मेंटल एक्टिविटीज़ एंड प्रोसेसेस विच आर यूनिक टू ह्यूमंस. इट इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन, analysis of information received from the environment. Whatever environment gives us, and we need to think over the things, that means we are thinking, we are in the state of the thinking. It is higher mental process through which things are manipulated and the required information is analyzed. Thinking is a complex mental process involved in manipulating and analyzing information, either collected through the sense from the environment or stored in the memory from past experiences. जो भी हमारी past experiences हैं, ये उस पे बिल्कुल भी रिले नहीं करते हैं. ये सिर्फ उन चीज़ों पे हम, जैसे हमारे प्रेजेंटली हम किस सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हम सोचते हैं, ना कि जो हमारी पास्ट एक्सपीरियंसेस हो चुकी हैं उन चीज़ों पे सोचने से कोई फ़ायदा नहीं. कभी कभार हम खुद सोचते हैं ऐसा हुआ था ना हमारी लाइफ में, लेकिन हुआ था ना, दैट मीन्स पास्ट एक्सपीरियंसेस. लेकिन वो पास्ट एक्सपीरियंसेस पे जो इंसान सोचता है दैट मीन्स ही इज़ गोइंग थ्रू सम ट्रॉमा, वो बीमारी से गुजर रहा है. लेकिन जो पास्ट एक्सपीरियंस हो चुका है उस पे रोने से कोई फ़ायदा नहीं है. एंड जो प्रेजेंटली हो रहा है और उस पे हम सोच रहे हैं कि ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व होनी चाहिए, दैट मीन्स वी आर इन दिस good state of mental activity. We are just thinking about the problem, how we can solve this problem. But अगर हम सोचें कि past experiences में क्या हो गया था, अब वो कैसे ठीक हो सकता था, तो दैट मीन्स वी आर नॉट इन अ प्रॉपर मेंटल स्टेट, क्योंकि हम उस चीज़ पे सोच नहीं सकते. वाई टू क्राई ओवर अ स्पिल्ड मिल्क. तो इसीलिए या तो उसी टाइम इंसान को सोचना चाहिए कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें, दैट मीन्स वी आर इन द स्टेट ऑफ थिंकिंग. लेकिन जब हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस हो चुके होते हैं तो उस पर रोने से, सोचने से कोई फ़ायदा नहीं होता है. इसलिए थिंकिंग वी कैन से दस मे बी डिफाइंड एज अ पैटर्न ऑफ बिहेवियर इन विच वी मेक यूज़ ऑफ इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, सिम्बल, साइंस और थिंग्स एंड इवेंट्स फ्रॉम द सोल्यूशन ऑफ सम स्पेसिफिक purposeful problem. I hope you understand it. It was all for today, and it was all about the nature and its nature of thinking and the thinking itself as a definition. I hope you understand it. It was all for today. Thank you.